अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ laravel सर्विसेज एप्लीकेशन। इसमें जो मेरा फ्रंट एंड है टेम्पलेट, इसमें मैंने थोड़ी बार चेंजिंग की है कि मैंने एक और सेक्शन बीच में ऐड किया है, सर्च सर्विसेज बाय लोकेशन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिटीज़ वाइज डाटा शो करवाएंगे। यूज़र अपनी सिटी के हिसाब से सर्विसेज को देख सकता है और इससे ये भी पता चलेगा कि कौन कौन से सिटीज़ में हमारी सर्विसेज अवेलेबल हैं। तो इसके लिए मैंने किया कि मैं पहले फ्रंट एंड बता देता हूँ कि मैंने एक और सेक कंपोनेंट क्रिएट किया है, ठीक है, विद द नेम ऑफ वेब एप्लीकेशन डॉट ब्लेड डॉट PHP इसको। और इसके अंदर जो मैंने किया है, जो हमारा फुटर था उसी को कॉपी करके पेस्ट किया है। इस सेक्शन के नीचे रो कंटेनर के अंदर मैंने उसका एक कॉल MD के LG2 के नाम से डिव बना दिया है और उसके अंदर एक मैंने एक और डिव क्रिएट किया विद फुटर विजिट फुटर मेन्यू। और यहाँ पर मैं एक लूप फंक्शन लगा रहा हूँ फॉर कि सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि m को मैं नहीं, उससे भी पहले जो है फॉर LG के लिए, क्योंकि हमारा एक ग्रुप में एक रो के अंदर मैक्सिमम 6 कॉलम्स हम शो करवा सकते हैं 2 के। तो यहाँ पे मैं कंडीशन पुट कर रहा हूँ कि जब तक ये 6 से कम हो तो वो दिखाता रहे वो क्या करेगा, क्योंकि ये स्टार्ट होगा 0 से, ठीक है। अगर मैं इसको 1 कर दूँ और इसको फिर मुझे यहाँ पर इज इक्वल लगाना पड़ेगा कि लेस देन हो या इक्वल हो, ठीक हो गया। अब भी वो 6 ही दिखाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट मैंने क्या किया है, UL के अंदर एक m वेरिएबल एक और लूप क्रिएट किया और उसमें मैंने 10 को लेस देन 10 किया है। और यहाँ मैंने PHP के अंदर सिटीज़ का डाटा जो मैं यहाँ से ले रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टिंक्ट ऑर्डर बाय सिटी असेंडिंग, यानी कि ABC की उसके ऊपर, यानी कि पहले A के सिटी दिखाएगा, फिर B के, फिर C के, फिर D के, इस बेसिस के ऊपर। और इनको मैं आगे पास भी कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक इंडेक्स वेरिएबल क्रिएट किया है। आई डिक्लेयर अ वेरिएबल विद द नेम ऑफ इंडेक्स वेयर आई एम मल्टीप्लाइंग I with 10 and adding m. For example, when I is equal to 1 and when I will multiply with 10, it's become 10, and after that adding m mean when it's add 0 it's remain 10, when it's add its value is 1, and adding 1 it's 11, same as 2 when it's 12. So for that I have to change again because of the for first row. Now when I is 0 I multiply with 10, it's become 0, when in plus 0 with 1 it's become 1 2 3 4, same. Or here I am checking if is set cities index exists, then this variable city is equal to cities index name city, because of that we are getting only city, not the other information, as the city value is null. Here I am showing the city, or here I am attach the route. So for that I have to change my location view here to remove this code, because currently we are not sending data in form of zip code and state, we are only sending the data on city. So after that, in my home section currently, because of that there is no section for location, for till that I am using it in my section with the app name. And here I am going to control X
use it or show it before the app. Or here I'm passing the cities. Here is the web location component of cities. So as I use this section to show services by location, same you have to show it in your services location, which I will use in my home before the app. Now view this front end, and here this is the section. Now it's become first or top of the app section. Now when I'm going to click on Multan, it will show us all the services exist in Multan. Currently there is no service available in Multan, so I'm going to back and search with name of Hyderabad. Because of that, in Hyderabad there is some services exist. This way we can show services by location. On location means cities. This is the all about this lecture, where we learn how to show services on the basis of cities in our application. In next, what I'm going to do in future, I will show country or state name as well before, and after that state or country show their relative or their cities. Okay, means suppose I first, here is the name of America or other country, Afghanistan, then it will show the cities of Afghanistan. Here it become Bangladesh, then it shows the cities of Bangladesh. So in future, not now, in future I will implement this, and when I will implement that, I will show you how I will do it. So till that, this is the end of today's lecture. I am hope you will like this and share my video with your friends, colleagues and classmates. Also, if you have any question related to this lecture, you can comment me or mail me or WhatsApp me on my WhatsApp number, which I will tell in my previous lecture and now as well. My WhatsApp number is 923106473564, and my email address is muhaffan@gmail.com. See you in next lecture. Till that, Allah Hafiz.